हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सजादवानी। आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द फंडामेंटल राइट्स, जो आपकी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट सिलेबस में दिया गया है एंड इट्स आल्सो इन द सिलेबस ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इन द यूपीएससी, द जेकेपीएससी एंड इवन द एसएसबी एग्जाम्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल राइट्स दे आर एनश्राइन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट, ठीक है। So part 3 of the Constitution of India, it contains the provisions for the fundamental rights, and the provisions for the fundamental rights, they are contained from Article 12 to Article 35 of the Constitution of India. ठीक है, पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, ठीक है। So the fundamental rights, they are present in the part 3 of the Constitution of India from Article 12 to Article 35. उसके बाद आप ये याद रखेंगे that जो हमारे framers थे of the Constitution of India, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से डिराइव किए, क्योंकि हम कभी कभी कहते हैं दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। वी हैव डिराइव्ड वेरियस प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला दैट व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वी रिसर्च्ड द मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो द फंडामेंटल राइट्स, द प्रोविजंस फॉर द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। Because in the US Constitution we have the Bill of Rights. तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं, दे हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट आप ये याद रखेंगे दैट द फंडामेंटल राइट्स इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। और बस इतना याद रखेंगे, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 दे आर नोन एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, एंड जो हमारा पार्ट 3 है, इट कंटेन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर वेरी कंप्रेहेंसिव। एंड द फंडामेंटल राइट्स दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर। अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिर मैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स में आपको समझाऊंगा, ठीक है। So fundamental rights, they are justiciable in nature, and the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in any constitution of the world, even the USA, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो fundamental rights, we have an elaborate list of fundamental rights which are very elaborate in the Constitution of India, and they are more elaborate than any of the constitutions of the world, even more elaborate than the fundamental rights, that is the Bill of Rights in the Constitution of USA, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। and the fundamental rights, they are justiciable. तो मैं आपको ये बताऊं that the fundamental rights, they are guaranteed by the Constitution of India to all the persons, ठीक है। The fundamental rights, they are guaranteed by the Constitution of India to all the persons, and there is no discrimination in guaranteeing these things, ठीक है। and the most important thing you have to remember about the fundamental rights is that fundamental rights, they uphold the equality of all the individuals, ठीक है। The fundamental rights, they uphold the equality of all the individuals, ठीक है, and the dignity of individuals. Fundamental rights, they uphold the equality of individuals, they uphold the dignity of the individuals, and they uphold the public interest and unity of nations. This is the crux of fundamental rights. So, the fundamental rights in the Constitution of India, they uphold the equality of individuals, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का मकसद यही है दैट दे एंश्योर द इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, दे एंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये काम करते हैं टुवर्ड्स द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। और फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं दैट द फंडामेंटल राइट्स, दे आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। We have the political democracy, we have the social democracy, and we have the economic democracy. The directive principles of state policy, they ensure the social and economical democracy, while the fundamental rights, they ensure the political democracy. ये आपको याद रखना है। Political democracy means they prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country, ठीक है।
मीन्स ये एक डिक्टेटरशिप को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक ऑथोरिटेरियन रूल को खत्म करना चाहते हैं, और ये एक इंसान की जो लिबर्टीज हैं और इंसान की फ्रीडम है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो दे प्रिवेंट द इन्वेजन ऑफ द स्टेट इन द पर्सनल लिबर्टीज ऑफ पीपल, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स दे आर मेंट फॉर promoting the ideal of the political democracy, and they prevent the state from interfering in the personal liabilities of the personal liberties of the people and they protect the personal freedoms of the people, and they prevent the establishment of an authoritarian state, ठीक है। इसका मतलब ये है these fundamental rights they act as protective mechanism, they act as a limitation, ठीक है। they act as a limitation on the tyranny of the executive and the arbitrary laws of the legislature, ठीक है। जो हमारा एग्जेक्टिव है और जो हमारा लेजिस्लेचर है, आवर एग्जेक्टिव इट एक्ट्स, ठीक है, जो इसकी एक्शंस हैं, एंड आवर लेजिस्लेचर इट मेक्स लॉज। हमारे एग्जीक्यूटिव के एक्शंस ऐसे होने चाहिए और हमारे लेजिस्लेचर के लॉज ऐसे होने चाहिए विच डू नॉट oppress the common people, ठीक है। So these fundamental rights they operate as the limitation or they are the limiting mechanism on the tyranny of the executive and the arbitrary laws of the legislature, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है इट डजंट एक्ट इन अ टायरेनिकल वे एंड our legislature it doesn't make laws which are very arbitrary. So जो फंडामेंटल राइट्स है इनका एक ही काम है, दैट इज दे एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, ठीक है। ऑब्वियसली आवर गवर्नमेंट इट शुड बी अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। दैट मीन्स हमारे एग्जीक्यूटिव और हमारे लेजिस्लेचर का जो आर्बिट्ररी एक्शन है, आर्बिट्ररी लॉज हैं, द फंडामेंटल राइट्स दे प्रिवेंट दीज थिंग्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, ये भी एक पॉइंट है। द फंडामेंटल राइट्स, इनको हम फंडामेंटल राइट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स दे आर फंडामेंटल। व्हाई दे आर फंडामेंटल? बिकॉज they are guaranteed by the constitution, and constitution is the basic law of the land, or it is the fundamental law of the land. That's why the fundamental rights they are known as the fundamental rights only, ठीक है। इनको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर गारंटीड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। व्हाट इज द लॉ ऑफ द लैंड? व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसके अलावा इनको फंडामेंटल राइट इसलिए भी कहते हैं बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द फंडामेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। दैट मीन्स दे आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, चाहे वो उसकी मटेरियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो या मोरल डेवलपमेंट हो। फॉर ऑल दीज डेवलपमेंट्स द फंडामेंटल राइट्स आर वेरी एसेंशियल। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सो आपसे कोई पूछे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स तो आप कह सकते हैं द फंडामेंटल राइट्स दे आर enshrined in part 3 of the Constitution of India from Article 12 to Article 35, and they have been derived from the Constitution of USA, from the Bill of Rights of the Constitution of USA, and they are also known as the Magna Carta of India, and they are the justiciable provisions of the Constitution, and they are very elaborate in the Constitution of India, and they are guaranteed to all the persons, and they ensure the equality, dignity of individuals and help in the larger public interest and the unity of the nation. They ensure the political democracy, establishment of the political democracy, they promote the ideal of the political democracy. What is that? They prevent the establishment of an authoritarian state, ठीक है, और they prevent the people from the arbitrary actions, arbitrary laws of the legislature and the tyrannical actions of the executive, ठीक है। they act as a safety valve, ठीक है, control mechanism, and they are fundamental because they are guaranteed by the fundamental law of the land, that is the constitution, and they also are fundamental because they are fundamentally important for the basic development of an individual, whether it is an intellectual development, इसकी moral development हो, spiritual development हो या material development हो। जो हमारा constitution था originally, और constitution it provided for the 7 fundamental rights. There were 7 basic fundamental rights, ठीक है। There were 7 basic fundamental rights in the Constitution of India, ठीक है। We had the right to equality,
we had the right to freedom, we had the right against exploitation, right? We had the right to freedom of religion, and we had the cultural and educational rights, and we had the right to property, and we had the right to constitutional remedies. So basically our constitution, it contained the provisions for 7 types of fundamental rights: the right to equality, the right to freedom, the right against exploitation, the right to freedom of religion, the cultural and educational rights, the right to property, and the right to constitutional remedies. ठीक है? Right to equality, it is enshrined in Article 14 to Article 18. This right to freedom, it is enshrined in Article 19 to Article 22. The right against exploitation is enshrined in Article 23 to 24. कभी questions आते हैं, basic questions. Right to freedom of religion is enshrined in Article 25 to 28. Cultural and educational rights, they are enshrined in Article 29 and 30. This was enshrined in Article 31 and this in Article 32. ठीक है? The other articles like the Article 12, Article 13 and the Article 33, 34 and 35, they deal with some other matters. So the rights, the fundamental rights, they are enshrined in only these articles. ठीक है? तो आप ये कैसे याद रख सकते हैं? आप एक एक्रोनिम से याद रखेंगे. ठीक है? That acronym E is EFREC. EFEREC, क्योंकि इसमें हमारा राइट टू प्रॉपर्टी नहीं आएगा, बिकॉज दिस राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये मैं बाद में बोलूंगा. EFREC, EFEREC, this is equality, this is freedom, this is exploitation, this is religion, this is education, this is constitutional remedies. So you can remember the fundamental rights, the 6 fundamental rights that are existing in the Constitution of India by this acronym, that is EFREC. तो आप ये भी याद रखेंगे, जो पहले जो right to equality है, that is enshrined in how many articles? 14, 15, 16, 17, 18, that is 5 articles. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं. Then right to freedom, ठीक है, कितने आर्टिकल्स में है? 19, 20, 21 and 22, that is 4 articles. Then right against exploitation, 2 articles. Then freedom of religion, 25, 26, 27 and 28, 4. Again 2, this is 1. ठीक है? 5, 4, 2, 4, 2, right? First you will remember 5 articles, then 4, 2, 4, 2 and then 1 article. ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. It depends on your memorizing technique, आपकी कौन सी है. ठीक है? अब हम बात करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी मैंने कहा कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई? बिकॉज इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया by amendment act which is known as 44th constitutional amendment act of 1978. You must remember this. This is very important. So the right to property, it is no longer a fundamental right because it was removed from the list of fundamental rights by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. And finally, where was it taken? It was made a legal right. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. So right to property, it was made a legal right under Article 300A of the Constitution of India in Part 12. तो मैंने कहा कि इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हमने पार्ट 3 से निकाला और पार्ट 12 में डाल दिया. राइट टू प्रॉपर्टी का हमने पार्ट 3 से आर्टिकल 31 से निकाला, आर्टिकल 31 हमने डिलीट किया एंड वी इंसर्टेड आर्टिकल 300A. ठीक है, जहां पे आप ये A, B, C देखेंगे, दैट मीन्स दीज आर द इंसर्टेड आर्टिकल्स. ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तब नहीं थे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम टू एग्जिस्टेंस. सो at present there are only 6 types of fundamental rights which I told you can remember by the acronym EFREC. ठीक है, EFEREC. Right, equality, freedom against exploitation, freedom of religion, cultural and educational rights and the right to constitutional remedies. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे about the features of the fundamental rights.